students, this is lecture number 15th of final accounts without adjustments, financial statements without adjustments. This is our second last lecture of this chapter. हमने जीएसटी की ट्रीटमेंट की है, अभी और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. कल मैंने आपको 21 या 20 करने तो सभी क्वेश्चंस है. चलिए पहले 20th क्वेश्चन करते हैं. मेक द फॉर्मेट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ मेहरा ब्रदर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L and balance sheet as at that date. In the books of Mehra Brothers, make the format. In the books of Mehra Brothers, trading amount, particulars amount, continued for P&L, after that balance sheet as at 31st March 18. Balance sheet as at 31st March 18. Drawings subtracted from capital. Drawings subtracted from capital. Goodwill, asset, land and building, asset, plant and machinery, asset, loose tools, asset, bills receivable, assets, opening stock, debit side of trading account, opening stock, debit side of trading account, purchases, debit side of trading account, wages, direct expense, debit side of trading account, carriage, only carriage, it's carriage inward, debit side of trading account, coal and gas, direct expense, debit side of trading account, rent and rates, indirect expense, debit side of P&L account, salaries, indirect expense, debit side of P&L account, discount, only discount is given, so it is discount allowed because it is debited, क्योंकि डेबिट साइड पे है. कैश, एसेट, डेटर्स, assets, repairs,
Indirect expense, debit side of P&L account. Stationery, debit side of P&L account. Audit fees, indirect expense, debit side of P&L account. Sales return, subtracted from sales. Depreciation, indirect expense, debit side of P&L account. Postage, debit side of P&L account. GST, इनपुट है 5, आउटपुट है 3, सो 10 and 6, इनपुट का टोटल आ रहा है 10, आउटपुट का टोटल आ रहा है 6, सो इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट, विल बी शोइंग ऑन द एसेट साइड. GST, इनपुट CGST 2, 5 से 3 सेट ऑफ हो गया, बच गया 2. इनपुट SGST 5 से 3 सेट ऑफ हो गया, बच गया 2, रह गया 4. 4 समझ आ गया आपको? 10 minus 6, टोटल 10,000 था, टोटल 6,000 था, डिफरेंस इज 4. मूविंग टू द क्रेडिट साइड, कैपिटल 25,000. Sales, credit side of trading account 40,600. Purchase returns, subtracted from purchases. Purchase return subtracted from purchases 250. Sundry creditors, liabilities 2,500. Loan, liability 15,000. Bills payable, liability 8,000. Miscellaneous income, credit side of P&L account. Miscellaneous income, credit side of P&L account. Bad debts recovered, credit side of P&L account. Journal reserve, liability. Basically it is a part of profits not given to proprietor. ये वो प्रॉफिट है जो हमने पहले से रखा हुआ है पर प्रोप्राइटर को प्रॉफिट की फॉर्म में नहीं दिया, बिजनेस में रखा है, इन केस वी नीड एनीथिंग. CGST already cancelled. Closing stock 8,000. Credit side of trading account, closing stock. Credit side of trading account. And asset side balance sheet. And asset side balance sheet. That's it. Let's balance it. ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 48,300. और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 31,450.
The difference of trading account is 16,850. Let's post it. To gross profit balance 16,850. This gross profit will be transferred to P&L. The same procedure will be done for P&L account. The total of credit side is 22,650. And for debit side is 7,150. The difference of P&L account is 15,500. P&L का difference आ रहा है 15,500, which is nothing but net profit. To net profit balance 15,500 which will be transferred to capital. Your balance sheet should match. The total side of liability side is 57,300 and same as the asset side. The balance sheet is matching with a total of 57,300. Moving to next question. Question number 23. Let's move to next question. Question number 23. इसमें पहले मैं इसमें आपको पहले जीएसटी की ट्रीटमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आई विल बी एक्सप्लेनिंग द जीएसटी ट्रीटमेंट फर्स्ट, उसके बाद ही हम शुरू करेंगे. 23 का वर्किंग नोट. इनपुट सीजीएसटी 15, एसजीएसटी 15 and IGST 25, 30, 25, 55,000. इनपुट जीएसटी का टोटल 55,000 है. मतलब हमने जो भी परचेजेस की हैं, फिक्स्ड एसेट खरीदा है, उसके ऊपर जो जीएसटी पे किया है वो 55,000 पे किया है इस साल. और जो आउटपुट है, मतलब जो हमने गुड्स बेचे हैं उस पर जीएसटी जो लगा है वो है 12, 12, 21, 12, 12, 21. The total is 24, 45,000. Total is 45,000. 3, 4, right. Input is greater than output. इनपुट बड़ा है आउटपुट से, तो ये एसेट साइड पे हम शो करेंगे. विल शो ऑन द एसेट साइड विच इज 10,000. एसेट साइड पे 10,000 शो होगा. यहां तक तो क्लियर हो गया.
10,000 शो होगा एसेट साइड, बट किसके हेड में? चलिए सेट ऑफ करते हैं। इनपुट CGST, इनपुट SGST, लेट इट बी लाइक दिस, टेबल ही बना देते हैं। CGST, SGST, IGST। इनपुट आउटपुट 15, 15, 25, 12, 12, 21। C को C से कैंसिल करेंगे, S को S से कैंसिल करेंगे, I को I से कैंसिल करेंगे। तो C से कैंसिल हुआ, बच गया 3। 15 से 12 माइनस किया, बच गया 3। 25 से 21 माइनस किया, बच गया 4। राइट? अभी भी इनपुट पड़ा हुआ है, दैट्स इट, विल शो इट। हाँ, अगर हमारा कुछ इनपुट, वेट, पहले हम आई कैंसिल करेंगे फिर एस, ताकि आपको वो टेक्निक भी मैं समझा दूं, फिर हम शो करते हैं। पहले इनपुट आई कैंसिल करते हैं। ये देखिए, जो पहले किया था वो भी गलत नहीं था, बट आई वांट कि मैं आपको इन डिटेल समझाऊं। इनपुट IGST, आउटपुट IGST, 25, 21, $4,000 रह गया। अब ये जो 4,000 इनपुट है, इसको हम S से कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास रह गया इनपुट IGST। अब दिस इनपुट IGST 4 आउटपुट CGST से कैंसिल होगा। ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही करेंगे जैसे 10,000 मैंने समझाया है। हाउ मच इज आउटपुट CGST? 15, वहां से 4 कैंसिल हो जाएगा। ये है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जो आपको हायर स्टडीज में सिखाई जाती है। पहले आई से कैंसिल होगा, जो बच गया वो C से कैंसिल होगा। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस। और अगर फिर भी बच जाता तो वो S से कैंसिल होता। बट आपने एग्जाम में कैसे करना है? द रेगुलर वन, C कैंसिल विद C 3, S कैंसिल विद S 3, I कैंसिल विद I 4, 3, 3, 4, total is 10. Let's make a format. Let's make a format in the books of Kalra. In the books of Kalra, trading in P&L account for the year ending 31st March 19. For the year ending 31st March 2019. Speed up, make the format. Particulars amount, particulars amount. आई नो हो सकता है आपने जीएसटी वाला वर्किंग नोट अभी नोट ना किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, हम अभी अकाउंट्स कर रहे हैं, जीएसटी को राइट ऑफ हम टैक्सेशन में हायर स्टडीज में सीखेंगे। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक पे समझा रहा हूँ। सी कैंसिल विद सी, एस कैंसिल विद एस, आई कैंसिल विद आई। थियोरी में आपको सारा पता होना चाहिए कि पहले क्या कट होता है फिर क्या। प्रैक्टिकली विल जस्ट कैंसिल सी सी, एस एस एंड आई आई एंड द बैलेंस विल शो इट। Opening stock, debit side of trading account.
purchases, debit side of trading account, wages and salaries, wages पहले लिखा है, direct expense, debit side of trading account, sundry debtors, assets, $13,000, bad debts, debit side of P&L account, sales return, subtracted from sales on the credit side of trading account, patents, assets, that too intangible, so non-current asset, rent, indirect expense, debit side of P&L account, drawings, subtracted from capital, drawings, subtracted from capital, ट्यूशन फीस ऑफ सन, बेटे की ट्यूशन फीस पे कर दी, ड्राइंग्स, पर्सनल नेचर खर्चा है, पर्सनल एक्सपेंस, 200, फर्नीचर, एसेट, बिल्डिंग, asset, cash in hand, asset, prepaid expenses, asset. What is prepaid expense? एक्सपेंस जो एडवांस में पे कर दें आप, जैसे सैलरी आप अगर एडवांस में पे कर दें, distribution expenses, debit side of P&L, bank charges, debit side of P&L, repairs and renewals, debit side of P&L, vehicles, assets, depreciation, debit side of P&L, इनपुट C 15, आउटपुट C 12, 15 minus 12 3, same as 15 minus 12 3, same 25 minus 21 4, input is greater than output, so GST, input C 3000, input S 3000, input I 4000, total 10,000.
Moving to the credit side, sales, credit side of trading account 45,000. Creditors, liabilities 7,500. Sales, purchase return subtracted from purchases, debit of trading, dividend on investments, income, dividend received, bills payable. Sundry creditors are 75. After that we have rent outstanding. Wait, we have rent outstanding. I have seen question number 22. Creditors are 75. Right. Rent outstanding is liability. Outstanding rent is a liability. देनदारी, खर्चा जो अभी आपने देना है. Dividend received, income, credit side of P&L. Bills payable, liability. Bills payable, liability. Purchase return, debit side of trading subtracted from purchases. Purchase return 150. Bad debts recovered, credit side of P&L account. Interest credit, credit side of P&L account. It is interest earned. हमें कैसे पता चला? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पड़ा हुआ है. कैपिटल, लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम मिस्टर सूरी, liability, Mr. Suri's loan 2,000, liability. GST हम ऑलरेडी कैंसिल करके एसेट साइड पे पुट कर चुके हैं. दैट्स इट. लेट्स क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट. Do we have any closing stock? Yeah, we do have. Closing stock is 8,000. Credit side of trading account. Closing stock 8,000. Credit side of trading account. And asset side of balance sheet. Asset side of balance sheet. So it's 44,700. It's 14,850. Right. Let's close the trading account. The total of credit side ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल है 52,700 और डेबिट साइड का टोटल है 26,850. Difference is 25,850. Gross profit. The debit is shorter, so 2
gross profit balance. Total is 52,700 and gross profit is 25,850. This gross profit will be transferred to the credit side of trading account. Let's close the P&L account now. To net profit balance. The total is 28,150. क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 28,150 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 15,250. डिफरेंस इज 12,900 to net profit 12,900. This net profit will be added to capital. The net profit is added to capital. The total of the liability side is 62,900 and should be same with the asset side. Your balance sheet is matching with a total of 62,900. Okay, I'm giving you homework we'll do in last lecture, that is 16. Next question number 36. Question number 36. आपको कोई क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का भी आ सकता है, जैसा कि ये है. आई रिपीट, क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स का भी आ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन 36 में बोला गया है. आप देख सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट है और मिसिंग वैल्यूज गिवन है. मींस मिसिंग वैल्यूज आपने निकालनी है. फर्स्ट लेट्स राइट इट वंस. एक बार लिख लेते हैं जो चीज़ें ऑलरेडी हैं. नो ट्रायल बैलेंस, नो P&L. ट्रेडिंग अकाउंट के सारे अकाउंट्स गिवन है. Now this is your question. Trading account given है. Opening stock is 30,000.
परचेजेस नहीं पता, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इज 6,000, वेजेस नहीं पता, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस नहीं पता, कैरेज ऑन परचेजेस और कुछ भी नहीं पता है। ये आपके बनेंगे वर्किंग नोट। इट्स अ स्मॉल 4 मार्क का क्वेश्चन, लेस ऑफ अकाउंट्स, मोर ऑफ मैथ्स। अकाउंट्स कम है, मैथ ज्यादा है इसमें। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक इज 10% ऑफ सेल्स। वर्किंग नोट, opening stock is equal to 10% of sales. 30,000 is equal to 10% of sales. 30,000 into 100 by 10 is equal to sales. 3 lakh is equal to sales. Working note 1, 3 lakh. Cool? परचेजेस नहीं पता। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 10% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। 6,000 is 10% of closing stock. So 6,000 into 100 by 10 is equal to closing stock. We'll get closing stock as 60,000. Closing stock आ गया 60,000. Working note 2. I hope you are getting. The total is 3,60,000. तो ये भी 360 होगा। Wages 50% of opening stock. Wages 50% of opening stock. So 50% of 30,000. 15,000. Import duty 5% of closing stock. 5% of 60,000, which is 1,500. No, 3,000. Factory expenses 4% of sales. 4% of 3 lakh. 3 lakh का 4% is 12,000. Carriage on purchases 100% of wages plus 5,000. 100% of wages plus 5,000 is 20,000. Freight 10% of closing stock. 10% of 60,000. 6,000. Gross profit 90% of closing stock. 90% of closing stock is 54,000. This is called less of accounts, more of maths. Fill in the blanks. Purchases आ जाएगी balancing figure. Purchases आएगी balancing figure. इन सबको प्लस करके ये आता है, तो this is x. You may say this is x. This plus 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 this is 360. So this is basically the balancing figure. 3,60,000 minus 54,000 minus 6,000 minus 20,000 minus 12,000 minus 3,000 minus 15,000 minus 6,000 minus 30,000. 2,14,000. Perfect. This is lecture number 15. We are done with this.
left with the last lecture of this chapter 16, financial accounts, financial statements, final accounts without adjustment. Last lecture 16 tomorrow. और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क मिलेंगे, वो ज़रूर करने हैं आपने. विल बी गिविंग यू टुमारो. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.